part where we will be talking about what is the principle of operation, how does it work, how do we use it. So if you let's read it. CRO is a device used to supply electrical signal, so that we understand, which is primarily the function of time. So like when we give an electrical signal, it changes with time. It is a function of time. So the input voltage is amplified by vertical amplifier and passes through a delay line and applied to vertical deflection plate. The luminous spot strikes the phosphor skin and provides a bright visible spot on the screen, either orthogonal axis, x-axis or y-axis. The x-axis is deflected at constant rate related to time using horizontal plate, and y-axis is defined in response to an input voltage by using V plates means vertical plates. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो हम सिग्नल देखते हैं ये टाइम के साथ साथ वेरी करता है. तो इनपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ देते हैं, तो वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड होता है एंड देन इट पासेस टू डिले लाइन एंड देन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई हो जाता है. So let us go to the block diagram. So this is the input signal which we send. It goes to vertical amplifier, it gets amplified, then it goes to delay line, and then it goes to vertical deflection plate. So once you understand clearly the block diagram and working, then you don't need to mug up anything. Whenever anything is asked in this section, you will be able to explain it. You just need to understand its working and the way we are going through it. So the luminous spot strike the phosphor screen and provide a bright visible spot on the screen. And ये बोले कि x-axis deflects at constant rate related to time using horizontal plate, and y-axis defined in response to input voltage. तो अभी एक चीज ये बता रहे हैं कि जो ये वर्टिकल प्लेट्स है, हम लोग यहाँ इनपुट सिग्नल दिया एंड इट गोज टू वर्टिकल प्लेट, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट रेट के साथ वोल्टेज मतलब ऐसा कुछ कांस्टेंट रेट के साथ चलता है कि जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे स्पॉट को कांस्टेंटली मूव करता है एंड इट शोज द सिग्नल. सो व्हाट इट मेक्स, जैसे कि टाइम के साथ साथ जैसे लास्ट टाइम दिन में बता रहा था कि जैसे हम लोग साइनसॉइडल वेव देंगे यहाँ पे, अगर साइनसॉइडल वेव यहाँ पे हम अप्लाई कर दे तो साइनसॉइडल वेव क्या होता है, या जो एसी सिग्नल है कि साइनसॉइडल वेव, ऐसे एसी सिग्नल अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे साइनसॉइडल से साइन वेव दिखना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल प्लेट रखें, हॉरिजॉन्टल प्लेट ना हो, तो क्या होगा, एक बार जैसे हम लोग के घर पे जो एसी आता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, तो एक सेकेंड में वो 50 टाइम्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे साइकिल में चेंज होता है. तो यहाँ पे हम अगर ये सिग्नल अप्लाई करेंगे इस प्लेट्स पे, तो दिस प्लेट्स विल चेंज पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, कि ये जो स्पॉट है वो स्क्रीन पे ऐसे मूव करेगा वर्टिकली, और ये 50 टाइम्स मूव करेगा एक सेकेंड में. तो हम, क्योंकि हम लोग की आंखें इतना सेंसिटिव नहीं है, तो व्हाट वी विल सी इन द स्क्रीन ए सिंपल लाइन दिखेगा. तो अप्लाई हम लोगों ने किया वो साइन वेव था और स्क्रीन पे हमको एक सिंपल लाइन दिख रहा है. So it is not an actual visualization. This is not what we are aiming for. We want a sine wave. जब हम अप्लाई किए तो साइन वेव दिखना चाहिए. तो क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं जो इस स्पॉट को हॉरिजॉन्टली कांस्टेंटली मूव करता रहता है. देन व्हाट वी सी, द वर्टिकल लाइन जो हम लोग पहले देख रहे थे बिना इसके, वो एक साइनसॉइडल वेव की तरह दिखता है. So that is what it is saying when it talks about operational part. So it says
The x-axis is deflected at constant rate relative to time by using horizontal plates, and y-axis is defined in response to an input voltage by using vertical plates. I think it is clear what leads to why we need to give a constant rate voltage, means a constant voltage, so that it can move to a constant rate, because we want to see the signal in a correct form. And like we have talked about the example, if we give a sinusoidal signal on a vertical plate, and if we don't have a mechanism to move this spot horizontally, then what we will see just an line on the screen. So this is how it operates. So you see, this thing is better explained here. Applying signal on vertical plane. If a sinusoidal voltage is applied, sinusoidal signal with sine wave to so applied to vertical reflection plate. Vertical reflection plate पे अगर हम लोग एक ऐसा voltage दे जो sine wave की तरह है, so it will make plates alternatively positive and negative. Thus, the positive half of signal upper plate will be positive, lower plate will be negative. While in negative half cycle, the plate polarity will reverse. So this will be like this. These are the plates. Here we have given the signal. So इनका polarity ऐसे change होता है. So result in the spot. Result is that the spot. अब जो electron beam यहाँ से निकल के आ रहा है, इसका positive negative polarity change होगा. That beam will deflect accordingly. So the result, the spot moves up and down in the same rate as the frequency of applied voltage. As the frequency of applied voltage is 50 Hz, therefore, due to persistence of vision, we will see a continuous vertical line. This is the line. Like if we don't have a horizontal plates to give a constant voltage, अगर हम लोग ऐसा apply करेंगे, ऐसा signal, so if these are vertical plates like this, so we will see on the screen there is a vertical line. Signal हमने ऐसा apply किया, and what we got is a line. So this is not the correct way. That is why what we do, therefore the line gives no indication of manner in which the voltage oscillating, since it does not reveal the waveform. The waveform भी नहीं बता रहा है, और एक सिंपल लाइन आ रहा है, उससे हमको ये पता भी नहीं चल रहा है कि वोल्टेज कितनी बार चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इसका फ्रीक्वेंसी क्या है. That we can't measure in this way. So for that we have horizontal plates. So horizontal plates what they do, ये जो स्पॉट है यहाँ पे, जैसे ये स्पॉट 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहा है, जो ये 1 2 3 4 5 दिखा है ऐसे दिखा रहा है. So when we given horizontal, जो स्पॉट है ये horizontally मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वोल्टेज दे रखा है, तो क्या होगा, it will look like this 1 2 3 4 5. Then we see जैसा हमने वेव सिग्नल दिया था वैसा वेव फॉर्म को स्क्रीन पे दिख रहा है. Then we can measure its frequency, voltage and a lot of other things. So that is why we have horizontal plates. That is why we give a constant voltage on a horizontal plate so that it can move constantly in this direction. In horizontally it can move. The display of signal waveform on CRO. So now we are moving to this thing. One interesting application of CRO is present the wave shape of signal on the screen. As discussed before, if sinusoidal signal is applied to vertical reflection plate, we get a vertical line. However, it is desired to see the signal voltage variation with time on the screen. This is possible only if we could also move the beam horizontally from left to right in a uniform speed, which is moving up and down. Further, as soon as a full cycle of signal is traced, the beam should return quickly to the left-hand side of the screen so that it can start tracing the second cycle. Okay.
तो जो हम लोग बोले कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे हम कुछ ऐसा वोल्टेज देते हैं कि बीम हॉरिजॉन्टली मूव करे, एंड व्हेन इट कंप्लीट्स द साइकिल it should get back to the point. So this is how it should be moving. So in order to beam moves from left to right at uniform rate, a voltage that varies linearly with time should be applied to horizontal plate. तो ये क्या बताया कि जो हम horizontal plate पे voltage apply कर रहे हैं, this should be linear. It should vary linearly. मतलब इसका जो वेरिएशन है, अगर इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, ये लीनियर नहीं होगा, तो भी जो सिग्नल हम देखना चाह रहे होंगे, that will be get distorted. We will not be able to see proper. So as of now, we have covered this part. When we are talking about operation, we talked about these are earlier we discussed there are two plates, horizontal plates, vertical plates. Now we are talking about what we do on horizontal plates and vertical plates. So we said that we applied signal on a vertical plate, and a horizontal plate we give a constant, we give a voltage in such a way that the spot moves with a constant velocity linearly on the horizontal. So this is the CRO. I hope now you remember, by looking at the screen you can see this is the device you have already used or you are familiar with. Probably in second semester I remember one instrument, and third semester maybe also you may have some way to trace, because a lot of experiments we have on our labs when we trace waveforms. So this is how it looked like. This is so you see this is the screen, and there this is a waveform. So we see this waveform, and if you remember it, the point used to move with a constant velocity, and that we can change also. There are a lot of knobs to control and to see how we want to see. So there are basically two channels. Two channels means we can give two different signals to see here. So sometime when we need to compare two waveforms, we need to see what is the phase difference between two waveforms. Then we give one on channel 1, one on channel 2, and then we see both waveforms, and then we can just calculate what is the phase difference. And there are different knobs to manage it. Probably if we get chance to do lab in the semester later, then we will be handling this, and then in a better way I will try to explain you how does it all these knobs work and all. So because I think जब तुम लोग पहले एक्सपेरिमेंट किए हो तो हो सकता है कि सेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा तुम लोगों को ना पता हो, क्योंकि ट्रेस कर लेते हैं ज़्यादातर टाइम, और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं होता है, क्योंकि मेन एक्सपेरिमेंट CRO नहीं होता है, मेन एक्सपेरिमेंट कुछ और होता है. So we just use it the tool in the experiment, and then probably we don't go that deeper detail into that. So this is time based. If we move this, so this the spot with what speed it moves, that changes with the time base. So if you move this signal starts moving fast or slow like that. So we have to stabilize. When we trace it, we stabilize it and we make it like it becomes stable. This is Y gain. Y gain means we have a vertical amplifier in block diagram, if you remember. So if we change this, the signal's amplitude changes. So what we do, it the vertical amplifier amplifies the signal so that we can see it. And here we can say how much means by looking at this knob position, we can identify कि हम लोग कितना amplify कर रहे हैं. तो amplify करने से हम उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली जो हमारा सिग्नल है उसका स्ट्रेंथ क्या है. As of now, we have discussed deflection sensitivity, and then now we are talking about operational part of CRO. How does it work, and
how do we use it. So we talked about what is the role of horizontal plates and vertical plates, and then why we need a constant velocity on horizontal sides to see proper signal. And then as of now we are looking at the instrument, how the CRO looks like. So we discuss few things in that, which like channel 1 channel 2 means दो वे होते हैं जहाँ पे हम दो सिग्नल दे सकते हैं, और ये चैनल 1 का सिस्टम होता है, ये चैनल 2 का सिस्टम होता है, दोनों आइडेंटिकल्स है। ये टाइम बेस है, जो टाइम बेस मतलब जो हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेट से बोले कांस्टेंट वेलोसिटी से पॉइंट मूव करता है, उसको हम लोग यहाँ टाइम बेस से चेंज कर सकते हैं। और भी कई सारे फीचर्स होते हैं जिससे हम कंट्रोल करते हैं और सिग्नल इसको स्टेबलाइज करते हैं, ट्रेस करते हैं, ऑल ऑफ थिंग्स जो हम उसको मेजर करने के लिए करते हैं। ये जो स्क्रीन होता है ये डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है, तो उससे हम लोग देख पाते हैं कि ये उसका एम्पलीट्यूड कितना है और फ्रीक्वेंसी एंड ऑल, a lot of things can be calculated. So we will discuss that part in application. So as of now, today we discussed operation of the amplifier, how does it work. So then you see what are various controls of CRO, कैसे हम इसको क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं. So in order to facilitate proper functioning of CRO, various controls are provided. Controls means ये जो knobs बहुत सारे इसमें होते हैं, इनसे हम लोग ये कंट्रोल करते हैं. जो हम सिग्नल दिए है वो सिग्नल स्क्रीन पे दिखे, और उसके लिए कुछ सेटिंग करना पड़ता है पहले. वही सेटिंग जो हम करते हैं वो कंट्रोल से करते हैं. तो वो क्या क्या कंट्रोल्स है. So one thing is like intensity control. We can control कि नॉब जो हम सिग्नल देख रहे हैं वो कितना इंटेंस दिख रहा है, बहुत हल्का तो नहीं दिख रहा है, बहुत इंटेंस तो नहीं दिख रहा है. ये हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं. एक नॉब दिया है तो उसको हम लोग मूव करेंगे तो उससे इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाएगा. होता क्या है एक्चुअली, जब हम नॉब चेंज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इंटेंसिटी मतलब जो ब्राइटनेस स्पॉट का है स्क्रीन पे, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, तो जो दिख रहा है हमको उसका भी इंटेंसिटी कम हो जाएगा. So this is how, so the intensity control we know, we can move it on the, when we have an CRO, we can move it, we can see intensity is increasing, decreasing. And now we need to understand what is happening actually. So the knob of intensity control regulates the bias on control grid and affects the electron beam intensity. If negative bias on grid is increased, the intensity of electron beam is decreased, thus reduces the brightness of the spot. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी हम कम ज्यादा करते हैं जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी स्क्रीन डिस्प्ले पे इंटेंसिटी कम ज्यादा देखना चाह रहे हैं. अनदर इज फोकस कंट्रोल. जैसे जो हम सिग्नल देख रहे हैं वो अगर बहुत डिफ्यूज फॉर्म में रहेगा तो एग्जैक्टली हम देख नहीं पाएंगे. जो लाइन दिख रही है, जो स्पॉट दिख रहे हैं वो बहुत बड़ा सा दिखेगा, तो उसमें इरर ज्यादा हो जाएगी जब मेजर करेंगे. तो द नॉब ऑफ फोकस कंट्रोल रेगुलेट द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द फोकसिंग एनोड. जो इलेक्ट्रॉन गन में हम लोग बात की, एक फोकसिंग एनोड होता है जो फोकस करता है. उस पर जब हम वोल्टेज कम ज्यादा करते हैं तो जो हमको सिग्नल दिख रहा होता है वो फोकस दिखता है. सो इफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड इज इंक्रीज, the electron beam becomes quite narrow and the spot on the screen is pinpoint. तो हम लोग चाहते हैं, प्रेस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एकदम पतला सा दिखे, जैसे कि प्रेस करने में गलती ना हो या एरर ना आए. या जब भी हम कुछ मेजर करते हैं, even if we are not pressing it, we are measuring on the screen, then also we need to see a focused beam, focused signal. Another control is horizontal position control.
horizontal position control, if we talk about like this is the signal. So sometimes we need to take it up, sometimes we need to take it down. So this is a control, and how it moves, with what speed is moved. This is another control. So these are the knob of horizontal position control regulates the amplitude of DC potential, which is applied to the horizontal deflection plate in addition to the usual surface wave. By adjusting this control, the spot can be moved right or left as required. तो ये क्या बताया, ये जो लाइन है ना, ये जैसे बीच में जो लाइन बना, ये एक कुछ वोल्टेज दिया गया है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है। तो हम जैसे हम इसको ऊपर नीचे ले जाते हैं, कभी कभी होता है कि हम इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, या जब प्रेस करना होता है या जब काउंट करना होता है तो उसको एक पर्टिकुलर लाइन के साथ अलाइन करते हैं। जो स्क्रीन पे ऑलरेडी लाइन बनी है उसके साथ अलाइन करते हैं। तो बेसिकली करते क्या है, एक डीसी वोल्टेज हॉरिजॉन्टल प्लेट में दिया है कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंट वोल्टेज, वो उसी को कम ज्यादा करके हम इसको अलाइन करते हैं कि कैसे दिख रहा है। Then vertical position for control, here the knob of vertical position control regulates the amplitude of DC potential which applies to the vertical deflection plate in addition to the signal. By adjusting this control, the image can be moved up or down required. तो जो इमेज है इसको ऊपर नीचे या इधर उधर मूव करने के लिए दो कंट्रोल रहते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल कंट्रोल कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन कंट्रोल, एक को वर्टिकल पोजीशन कंट्रोल। तो हमने 4 कंट्रोल सीखे, इंटेंसिटी कंट्रोल, फोकस कंट्रोल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। ये सब जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये सब कंट्रोल्स की हमको जरूरत पड़ती है कि पता चल रहा है कि सिग्नल इतना वीक है कि दिख ही नहीं रही लाइन, तो उसके लिए हम लोग इंटेंसिटी कंट्रोल से करते हैं। इंटेंसिटी कंट्रोल क्या करता है उसको भी हम अब समझ रहे हैं। पहले क्या था, जब हम यूज कर रहे थे तो वी आर जस्ट यूजिंग दिस नॉब टू इंक्रीज डिक्रीज इंटेंसिटी। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट डज इट रियली मीन। एंड देन फोकस कंट्रोल, फोकस कंट्रोल उसके जब जैसे वेव फॉर्म बहुत डिफ्यूज जैसे रहता है, बहुत मोटा सा दिख रहा है स्क्रीन पे, तो एट दैट टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ एरर। जो हम मेजर करेंगे वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें एरर रहेगा, तो इसको हम लोग